ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਮੰਨਤ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਐਟ ਦ ਬੂਮਬਾਕਸ ਪੈਂਟ ਹਾਊਸ and firstly to you, congratulations, you have been presenting India at a very big platforms and ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ beneficial ਹੈ society ਵਾਸਤੇ। So how is it to be there and to do so much for the people? To be very honest, the journey is never easy and I feel every individual has a very hard journey, but as long as you are passionate and you love what you do, it makes it easy. So बहुत ही amazing journey के साथ और बहुत अच्छे लोगों के साथ मेरा like association रहा है. So it has become like a stepping stone for me. So when I was a part of Miss India, I did not have any mentor and any person to guide me. So I felt that Chandigarh is a place where it is lacking a few things. There is a certain void in terms of fashion and everything. So once my journey of Miss India got complete in a full circle, I would say, because I got to work with many people, many designers on board, so I loved every bit of it. और उसके बाद मुझे था कि वापस चंडीगढ़ और पटियाला और बहुत सारे ऐसे टू टियर सिटीज़ जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ जी पोटेंशियल बहुत है बट एक्सपोजर नहीं है। सो ऐसी सी जगहें और उनको प्रमोट करना, यूथ को प्रमोट करना, टैलेंट को प्रमोट करना, सो इट्स ऑलवेज बिन अ हैप्पी फीलिंग फॉर मी। How the journey started from to Miss India? The journey is almost a decade back, but I remember every bit of it. It is so fresh in my memory. Like मुझे याद है कि it's like as if it happened yesterday. और nothing. To be very honest, it's very difficult to say that, but मेरे लिए ये fluke था. I was in front of TV watching the news and watching the Miss Indias being organized. उस टाइम पे सोनी TV पे आता था और मुझे याद है मैं टीवी देख रही थी, पॉपकॉर्न खा रही थी, एंड देन सडनली आई जस्ट सॉ द एड ऑफ ऐश्वर्या राय बच्चन कॉलिंग ऑल द गर्ल्स कम एंड पार्टिसिपेट एंड ऑडिशन इन चंडीगढ़. And I thought that was my calling because at that point of time I was pursuing my degree in architecture and I felt okay, obviously she was also a student of architecture and then she went into modeling and then obviously there was no looking back for her, so I felt like I was on the footsteps of Aishwarya Rai Bachchan. How was the support from the family and friends all as well? I think immense. I have always been proud to feel that I have always had steady hand back home, and that's the reason why I have been able to give my maximum output. The moment your personal life is sorted, it shows professionally. So I felt like जितने भी मेरे friends थे बहुत supportive थे. They used to like, comment everything whenever I was whenever they used to see me on television. So fulfilling ride, and as I said, your foundation, the moment your foundation is strong, the floors keep building up. You have been part of the Miss India journey and ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲਸ ਨੇ who are going for the pageants, even Miss Universe or Miss India, Miss World, they're also coming for Punjabi and the Bollywood movies. What is your take on that? I love it. I love the fact that our part of the side is being covered, showcased and exposed. I felt like back then when I represented India internationally as well, there was a certain void. Again I say that because यहाँ पे कोई आपको ना groom करने के लिए है, ना कोई आपको mentor करने के लिए, right guidance देने के लिए नहीं है. So I felt like somewhere down the line I need to do something like that for the society and something like that for the young girls. So I've been involved a lot with pageant training now, and somewhere down the line I felt that when
a certain girl from Himachal, from Punjab, from Chandigarh, like Harnas Kaur Sandhu. I remember I was a judge when she had auditioned, and it was a delight to see her. And the way now she's representing India internationally is beautiful. So I felt like, you know, there are so many young girls like that, so much of talent who's right there, and we just have to spot them, and they can actually be at the zenith. What is your message to the young girls out there who still think कि मतलब हमें जाना चाहिए कि हमें नहीं जाना चाहिए, because pageants are something that it's like beauty with brains. Yeah. So people recollected that हमें जाना चाहिए कि हमें नहीं जाना चाहिए, we should do it or not. What is your message to those girls, those women out there? To be very honest, I remember what I was before Miss India, but people remember me what I am after Miss India. So I felt that the pageant gave me a stepping stone. It groomed me internally for me to express externally. So for all the people out there, I feel that, you know, even the young girls, young boys, it is not just a pageant regarding, as you said, it's not just beauty. There is so much of intellectual conversations, because they focus everything about you, your diction, your pronunciation skills, your communication skills, how you stand, how you dress up. So I think these kind of classes now are available everywhere. Like in corporates, everyone give you those sessions and those workshops. So for me, that was an opportunity, and like, you know, I felt completely elated that I got to do that. And I feel everyone needs to do that. It's a part of grooming, and everyone needs to better themselves every day. Thank you so much for being with us, and it was lovely talking to you. Best wishes for all your candidates, all your students out there, and may they win a lot of pageants. Thank you so much. Thank you. So ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ Boombox Penthouse ਦੇ owner, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? Today is a big day, opening ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, and everybody is here. How you feeling? Very very excited. Patiala ने हमें बहुत सारा प्यार दिया. They've shown us a lot of love. I think all of Patiala has come to greet us and welcome us to Patiala. So it's a great feeling, and I'm hoping by the looks of it, जितना सबको मज़ा आ रहा है बस ऐसे ही आता रहे और लोग आते रहे. और जैसी वाइब देखने को मिल रही है, the restaurant and the clubbing part is different. So what was your thought and concept behind when you started making it? तो वी थॉट, यू नो, पटियाला में क्या है कि हर किसी का ना, हमारे पास ऑप्शंस कम है यहाँ पटियाला में, और सबको है कि कभी हमारा मन करता है कि हम सैटरडे नाइट को क्लबिंग करें, बट संडे को हम ब्रंच भी करें, अच्छा खाना भी हो. तो हमने एक बड़ी जगह लेके उसको ऐसे सेक्शंस में बनाया है कि आपका जिस हिसाब से मूड हो आप वैसी जगह एंजॉय कर सकते हैं. आप यहाँ PTR में विंटर्स में अच्छे व्यू के साथ किटी पार्टी भी कर सकते हैं, सैटरडे नाइट को क्लबिंग भी कर सकते हैं, लंच पे आ सकते हैं. तो आई थिंक सबके लिए कुछ ना कुछ है. एक तरह से यूथ और सारे एज ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा सोचा गया है कि कैसे सबको मैनेज किया जाए. आई थिंक सो हमने ये सोचा कि पटियाला में जो नाइट लाइफ के लिए लोग आज चंडीगढ़ जा रहे हैं या दिल्ली जाते हैं, वो पटियाला में भी वो क्राउड तो वही है, सबको चाहिए था. तो आई थिंक हमने वो मिसिंग गैप फिल किया है. और व्हाट अबाउट द टाइमिंग्स? वैसे तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, लाइक इन चंडीगढ़ ऑल्सो वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू 12 PM एंड एवरीथिंग. What are your timings over here, and what are the specialities of Boombox Penthouse? जो हमारी टाइमिंग्स है, जो लीगली अलाउड परमिसिबल लिमिट्स है सिटी की, उसी पे हम उसी को फॉलो करेंगे. जहाँ तक स्पेशलिटी है, हमारे यहाँ कॉकटेल मेन्यू बहुत नया है. हमारी बहुत एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ नई तरह की कॉकटेल्स हैं. हमारे सब इंटरनेशनली ट्रेंड बारटेंडर्स हैं. हमारे शेफ्स काफ़ी रिसर्च करके आते हैं. हमने पूरे इंडिया में जो बार्स खोले हैं, तो हमारे यहाँ वुड फायर फ्रेश ओवन पिज़्ज़ा है. इंडियन मेन्यू भी हमारा काफ़ी एक्सटेंसिव है. कॉन्टिनेंटल मेन्यू बहुत अच्छा है. और हमारे यहाँ एक बार एक्सचेंज भी है. बार एक्सचेंज में जो प्राइसेस अल्कोहल के होते हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं डिमांड सप्लाई के हिसाब से. What was your personal thought behind this starting this Boombox Penthouse? My personal thought was कि, you know, we wanted to create a luxury project. हमें पटियाला में लगा कि यंगस्टर्स के लिए भी बार्स हैं, बट एक जब आपको मन करे कि थोड़ा ड्रेसअप होकर कहीं जाना है तो कोई जगह नहीं है. So we want Boombox Penthouse to be a place where people can dress up, have a great time, and that doesn't mean it's a very expensive place. It just means कि we curate the crowd, we curate a good environment, good food, ताकि लोगों को एक नाइट लाइफ का ट्रू एक्सपीरियंस मिल सके. So the youth over here is enjoying, everybody is enjoying. What is your message to out all the youth over in Patiala, in Chandigarh? So now the Chandigarh people also comes to Patiala to party out here. No, अब तो यही हुआ. आज बहुत चंडीगढ़ से भी लोग आए. That's been a fantastic thing for us. I think I would just like to say, play hard, party hard, and stay safe. And I hope we can continue to enjoy it together. And everybody keeps loving and showing the love for Boombox. Thank you so much, sir, and wishing the best of luck for the moment. Thank you.